Welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will study continuity of complex functions. If you are okay with the concept of limit, then continuity को समझना आसान है. जब हमने लिमिट को देखा था तो वहाँ पर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया था एफ जेड और इस फंक्शन के लिए हमने जेड नॉट पर लिमिट के बारे में डिस्कशन किया था. बट वहाँ पर दिस इज नो नीड और नो रिक्वायरमेंट for this function to be defined at this point z naught. But in the case where we want to discuss continuity of this function at z naught, then this function has to be defined at z equal to z naught. Okay, so this is the key difference between the concept of limit and continuity. Okay, so let me start this discussion by the definition of continuous function. Okay, so this definition defines continuous functions. So a function f is said to be continuous at z नॉट. ओके, सो ये भी एक पॉइंट बेस्ड कंसेप्ट है. जैसे हमने लिमिट को एक पॉइंट पर आइडेंटिफाई किया था, वैसे कंटिन्यूटी को भी हम एक पॉइंट पर ही आइडेंटिफाई करते हैं. और जब हमें किसी डोमेन पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये अगर शो करना हो, देन वी हैव टू डिटरमाइन द कंटिन्यूटी एट ईच पॉइंट ऑफ दैट डोमेन. ओके, और जब हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है उस केस में ही हम फंक्शन को किसी डोमेन पर कंटिन्यूस बोलते हैं. ठीक है, continuous at z naught if limit of fz as z tends to z naught is equal to f of z naught. ओके, इन दी अर्लियर केस जहाँ पर हम लिमिट को डिसाइड कर रहे हुए थे वहाँ पर यहाँ हमने कैपिटल एल यूज़ किया. तो इस फंक्शन की z नॉट पर जो भी लिमिट आ रही है, अगर वो वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल है, तब इस केस में हम कहेंगे दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट z नॉट. ओके, तो आप देख ही पा रहे हैं कि लिमिट का एग्जिस्ट होना, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर डिफाइन होना, ये दोनों चीज़ें ही important है when we come to define the continuity of a function. Okay, so this is the definition of a continuous function. Now let me come to the epsilon delta definition. So we have epsilon delta definition of continuity. So a function f is said to be continuous at z naught if for each epsilon positive there exists delta positive such that absolute value of xz minus fz naught is less than epsilon whenever the absolute value of z minus z naught is strictly less than delta. तो जब कोई भी डेल्टा, ये जेड हमारे इस जेड नोट के डेल्टा नेबरहुड से बिलोंग करेगा, तो उन जेड की एफ इमेज दैट मीन्स एफ जेड इस एफ जेड नॉट के एप्सिलॉन नेबरहुड से बिलोंग करेगी. अगर ये ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन, तब हम कहेंगे दैट दिस एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट. ओके, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें देन यू कैन सी, सपोज दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम कॉपीज की फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर हम एक प्लेन में z की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और एक प्लेन में हम w, जैसे कि एफ जेड है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम इस वैल्यू को w बोलते हैं. इसलिए एक प्लेन w प्लेन है और एक z प्लेन है. ओके, सो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है कि सपोज हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये गिवन है. ठीक है, सपोज दिस इज आर w प्लेन and this is our z plane.
ओके। तो अगर इप्सिलॉन गिवन है तो इप्सिलॉन डिटरमाइन करता है एफ जेड नॉट के लिए एक नेबरहुड। सो यू कैन सी सपोज दिस इज आर एफ ऑफ जेड नॉट। इसका कोई भी आप एक इप्सिलॉन नेबरहुड बना रहे हैं, दिस इज इप्सिलॉन। ओके। अब कहने का सेंस क्या है कि हर एक इप्सिलॉन के लिए अब इन सारे पॉइंट्स के लिए जो कि इसके अंदर है, नॉट ऑन बाउंड्री, इन सारे पॉइंट्स के लिए हम कब कहेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स लें जिससे कि ये इमेज इसी के अंदर ही आए। तो हम ये ऐसा कह रहे हैं कि इस इप्सिलॉन के लिए जो जेड नोट यहाँ हमने यूज़ किया है, उसी जेड नॉट के लिए हमेशा हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जेड, दिस डेल्टा, फॉर विच कि यहाँ से जैसे ही हम कोई जेड को पिक करेंगे, उस जेड की जब एफ इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज दिस इज आर एफ, सॉरी दिस इज आर सपोज जेड, तो इसकी जो एफ इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज दिस इज आर एफ ऑफ जेड। तो जब जब जेड हम इस डेल्टा नेबरहुड से पिक करेंगे, तब तब हमें उसकी एफ इमेज इस इप्सिलॉन नेबरहुड में ही मिलेगी। इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी इप्सिलॉन पॉजिटिव, देन वी कॉल दिस एफ एज continuous function at z naught. Okay, so this is the geometrical meaning of epsilon delta definition. Now come to some examples so that we can understand this topic in a more closer way. So suppose we have this example number 1. It says that find the limit of fz equals to z square minus iota z plus 2 8 z equals to 1 minus iota, and discuss the continuity. ओके, सॉल्यूशन। सो पहले हम लिमिट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए फंक्शन तो डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है। सो गिवन दैट f of z equals to z square minus iota z plus 2, then this implies f of 1 minus iota is equal to 1 minus iota square minus iota 1 minus iota and plus 2. Okay, and if you simplify this, then you will have 1 minus 3 iota. And what about the limit? And limit z tends to 1 minus iota, f of z is same as limit z tends to 1 minus iota of z square minus iota z plus 2, and क्योंकि लिमिट का एडिशन ऑफ लिमिट of addition is same as the addition of limits, so you can write this as limit z tends to 1 minus iota z square minus iota limit z tends to 1 minus iota plus limit z tends to 1 minus iota 2. Now this is constant, so we will have 1 minus iota square minus iota 1 minus iota and plus 2, and of course this will be equals to 1 minus 3 iota. So you can see from this and this we have that, thus we have that limit z tends to z naught f of z equals to f of z naught, and hence fz is continuous 8 z naught equals to 1 minus iota. Okay, now come to example that shows that limit does not exist. Okay, तो does not exist के लिए हम किस तरीके से proceed कर सकते हैं using the different paths. Let me clarify that. Okay, so discuss the limit or the continuity. Okay,
continuity of principal square root function of t. Okay, function at z equals to minus 1. Again, the solution is very simple. So you can see in the z plane we have the scenario. Suppose this is our complex plane and this point, particular point is our z इक्वल्स टू माइनस वन. ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा शो कर दें कि किन्हीं दो पाथ के अलोंग अगर हम इस z इक्वल टू माइनस वन पर अप्रोच करें तो हमें डिफरेंट लिमिट्स आइडेंटिफाई हो रही हैं और इस केस में ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, राइट? So we will identify that path only. So first of all, what is the principal square root? जब कोई भी हम आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज कर लेंगे तो वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है? सो गिवन दैट what is the principal argument, principal square function, principal square root function is f of z equals to z to the power 1 by 2. The moment we say this is principal square root function, so we will write it as a square root of absolute value of z and then e to the power iota. Now this is what I was talking about, principal argument of z by 2. तो अगर आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज कर लेंगे तो वो रूट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है? अब हमें इस पॉइंट पर अप्रोच करना है तो यहाँ पर हम दो तरीकों से, इवन काफ़ी पाथ से हम अप्रोच कर सकते हैं, बट लेट मी आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पाथ. तो अगर हम कहें कि हम इस पॉइंट पर एक सर्कल के थ्रू आ रहे हैं, सो सी दिस सर्कल, suppose we have this path. This is unit circle, okay? Now from the upper side we are having this direction and from the lower side we are having this direction, okay? So this is our complete circle. यहाँ पर this green line shows कि जब हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमने ये पाथ यूज़ किया है और यहाँ पर थीटा वेरी करेगा पाई बाई 2 से पाई तक, ठीक है? और यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक, राइट? तो हम ये दोनों अप्रोचेस से देखते हैं कि इससे लिमिट की क्या वैल्यू आती है, ठीक है?